Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, Ayushman, Shivai. Good morning, Good morning. How are you all my babies? All are fine? Fine, ma'am. Very good. Fine, ma'am. Good. Now let's start from the date today. Ayan. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Fine. उस रूम में आओ ना रूम में कहाँ क्लास हो Yes, Ayan. What date is today? 20 January. Yes, very good. Today is 20 January 2022. Now everyone. 20 January 2022. Yes, very good. Now everyone mute your device and join your hands. Join your hands, close your eyes, start Gayatri Mantra. Om Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Om. Say thanks to God. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that fly. Thank you, God, for everything. You should say always thanks to God. Now rub your hands. Yes, very good. Trisha, rub your hands. Very good, Manasvi. Touch your eyes, your face, your throat, and all over the body. Very good, everyone. Now everyone stand up for the exercise. Yes, everyone, stand up, stand straight. Very good, and start from head exercise. Head up and head down. Yes, do it. Head up and head down. Left, right, left, right. Yes, very good. Now change. Now change. Touch your shoulders. Touch your shoulders. Very good, Shivai. Avni, do it. Very good, Aradhya. Moving. Aruhi, switch on the video. Opposite side. Very good. Now change. Hand should be straight like this. Moving. Hand should be straight, Shivai. Very good. Opposite side. Yes, very nice. Now change. One hand up and bend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, very good. Now last, open your legs. Open your legs and touch your toes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, now relax. Sit down. Sit down, everyone. Sit down and take a sip of water. Yes.
Yes, very good, everyone. Now, take out your maths notebook. Check out your maths notebook. Yes, everyone. So today we are going to learn about new number name. Okay. Before writing new number name, who will ask number name of number 1? Advik Yadav, tell me number name of number 1. O-N-E-1. Very good. Number name of number 2. Shivaya Dhingra will tell. P-W-O-2. Yes, very good. Number name of number 3. Vyom Pandey will tell. T-H-R-E-E-3-F. Yes, very good. Number name of number 4. Sahil Sikka will tell. F-O-U-R. Yes, very good, Sahil Sikka. Very good. Now, who will tell number name of number 5? Aishman Sahu will tell. Yes, Aishman. Mom. Number name of number 5? Number 5. F-I-V. 5. Yes. Very good. F-I-V-E 5. Now, number name of number 6, Aradhya will tell. Yes, I have 6. Very good. Number name of number 7, Manasvi will tell. BE आगे Yes. P-E-N. S-E-V-E-N 7. Now 8. Number name of number 8, Ayansh Kumar will tell. Good morning, ma'am. Good morning, Rahite. Now mute your device. Yes, Ayansh, tell me number name of number 8. Ayansh. E-I-G-H-T. Very good. E-I-G-H-T 8. Now 9. Yes, very good, Ayansh. Very good, Ayansh. Now next turn, Pravalika. Pravalika, number name of number 9. N-I-N-E-9. Very good. Now number name of number 10, Dhruvin will tell. Dhruvin, tell me number name of number 10. Yes, Dhruvin. Dhruvin, tell me number name of number 10 quickly. Very good, Dhriti. T-E-N 10. Now 11. Number name of number 11, Rahite will tell. Rahite is there. yes ma'am. Yes, ma'am.
Yes, Rahite. Number name of number Good 11. morning, ma'am. Yes, Medina. Good morning. Welcome to the revise. L-E-L-E-V-E-N. Very good. 11. Very good, Rahite. Now, Medina. Number name of number 12. E-W-E-N. Hmm. V-E. 12. Very good. Very good. Ishana. Number name of number 13. Yes, Ishana. Yes, THIRTEEN. 13. Yes. Now, babies, take out your maths notebook and write the date. So today we are going to write number name of number 14. Number name of number 14. Right? How to write number name of number 14? FOUR. 14. 14. राइट अब मेरे सारे बेबीज को 1 to 10 नंबर नेम लर्न हो गए हैं 11 to 20 is very easy right 14 FOURTEEN 14 yes quickly write in your notebook number name of number 14 FOURTEEN 14 now Trisha will read Trisha read it number name of number 14 F-O-U-R-T-E-E-N. very good 14. very good Trisha FOURTEEN 14 14 Avni you need to read yes Avni beta read it yes TEEN teen so quickly write in your notebook FOURTEEN 14 very good Shivai
Done, ma'am. Show me your notebook. Very good, Trisha. Show me your notebook, everyone. I am done, ma'am. I am done, ma'am. Yes, Ayansh. I have done my work. I have done. Yes, very good work, Ayansh Kumar. Very good, I have Sahil. done my work. Very good, Advik. Very good, everyone. Very good work. Now, name of number 14 is FOURTEEN. 14. I have done my work. Ma'am, I have done my work. Yes, Madina, very good. Yes, Aradhya, very good. Good morning, ma'am. Very good morning. Very good morning to everybody. I hope everybody is fine. Yes. Fine, ma'am. Very good morning. Very good morning to everybody. How are So you, today we ma'am? are learning. Good morning, everyone. Now be on mute. Please be muted now. Yes. So today we are learning the number name of 14, right? So 4 की spelling तो हमें आती है पहले से FOUR और बस हमने उसके साथ teen लगाना है, ठीक है? TEEN teen 14. Hand Yes. खेलता मैं. Aradhya, beta, please mute your device. Aradhya. हम आरोही का टर्न है. Yes, Aruhi, very good. Yes, now everyone will close their maths notebooks now. Close your maths copies now and sit straight and take out your English notebooks. Very good, Avni Gupta. Now please take out your English copies and close your maths notebooks. So what we have covered in this month, we have already completed our E sound. E sound हमने complete कर लिया है. Show Mohammed thumbs up if everyone knows it. E sound किस को आ गई है? Everyone is okay with E sound? Okay. So today ma'am is going to take a dictation of E sound words. ठीक है, मैं 5 words की dictation लूंगी, only 5 words. Clear? So take out your notebook, write down the date, and Mama will write on the top dictation. Mama is going to write on the top dictation. Shall I start? Ma'am. Very good, Manasvi. Now please take out your English notebook. Shall I start with the English dictation? Show Mama thumbs up if you are ready with your notebooks. Sahil Sikka, sit straight, beta. Sit nicely. Very good. Okay. अब ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से, ठीक है? मैम ने ना एक क्लोथ को धोया, ठीक है? I have washed one cloth. अब वो क्लोथ मेरा गीला है, सो हम गीले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शिवाय ढींगरा विल टेल. वो जो क्लोथ है वो गीला है, अभी सूखा नहीं है. सो व्हाट वी विल कॉल दैट क्लोथ? क्या बोलोगे उस क्लोथ को इंग्लिश में? Wet. Very good, very good. Wet. What we will say? The cloth is wet. Wet means गीला. Wet का क्या मतलब होता है? गीला. Wet. At wet. Write down in your notebooks. Were at wet. Were at wet.
were at wet. Were at wet. लिख लिया आयुष्मान, त्रिशा, ध्रुवीन, मनस्वी गुप्ता, have you written? Wet, Ayansh Kumar, done? Very good. Okay. Now listen to the second question. आप तो अभी पेंसिल से राइट करते हो ना? You are writing in your notebook with a pencil. बट जो आपकी बिग भैया या आपकी बिग दीदी हैं वो किससे राइट करते हैं अपनी नोटबुक में जो बिग है? वेरी गुड, वेरी गुड. पेन से राइट करते हैं ना. सो सेकेंड वर्ड इज प एन, पेन. प एन, पेन. प एन, पेन. Listen to the sound and write down. प एन, पेन. Vyom Pandey, are you writing? P and pen. P and pen. P and pen. The second word is pen. The third word is where do we sleep? हम कहाँ सोते हैं? धृति, where do we sleep? Unmute करके बोलिए. Yes, b at bed. Very good, Dhriti. B at bed. B at bed. B at bed. B at bed. Write down everyone. Third word is b at bed. B at bed. Now the fourth word. Everyone has written till bed. Show mama thumbs up if you have written till bed. Very good. The fourth word is leg. Leg का है हमारी सबको पता है ना? It is one of our body part. Leg. Write down. Valika, start writing with egg, leg. Egg, leg. Egg, leg. Very good, Medina. Everyone has written leg. Yes or no? Done? Okay. And the last word is how many fingers and thumb we have all together? एक साथ हमारे पास कितने हैं हमारे हैंड में फिंगर और थंब all together? 10. 10. Very good. Very good. 10. 10. You will write 10. And 10. The last word is 10.
and 10. Okay, after completing this, give your notebooks to your mama. Okay? Your mama will check your notebook from ma'am's board and mama will give 2 smileys if all are correct. Mama, please check from my board all 5. Nice. Ma'am, I have done. Very good. Okay, beta, nobody will unmute. I'm just looking at the notebook. Just hold in your hand. Very good, Ayansh Kumar. Very good, Ishana. Ishana, please be on mute, beta. I am looking at your notebook. Very good, Ishana. Very good, Rahitte. Very good, Manasvi Gupta, Trisha, Dhruvin. Who else has completed? Pravalika, very good. Avni Gupta, very good. Shivaya Dhingra, very good. Aradhya, good. Advik Yadav, very nice. Dhiti, very good. Vyom Pandey, where are you? Very good, Ayushman Sahu. Very good, Aruhi Raj, Sahil Sikka, Madina Khan, very good. So beta, today we have done the dictation. Tomorrow I am going to take a oral test. ठीक है, कल मैं एक oral test लूंगी इंग्लिश में E sound का. Clear to everybody and no mama help tomorrow in oral test. Clear? So today you have to practice of E sound at home. All right. Today's homework is to practice E sound at home. So tomorrow I will be taking a oral test. All right. सबको समझ में आ गया? Then show mama thumbs up if you are clear with this. Very good. Very good. Now please close your notebooks. Close your English copies now. Close your English notebooks quickly. Very good. And अब arms fold करके be seated like a good boy. ठीक है? और मैम की बात बहुत ध्यान से सुननी है. We have discussed about indoor games yesterday. कल हमने किसके बारे में बात करी थी? प्रवालिका will tell. प्रवालिका किसके बारे में कल हमने बात करी थी बेटा? Indoor games. इंडोर गेम्स के बारे में बात करी थी, है ना? जो गेम्स हम घर पे ही बैठ के खेल सकते हैं, those are known as indoor games, right? जैसे लूडो, चेस, कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, ब्लॉक्स वाली गेम भी खेलते हैं. वुडन ब्लॉक्स के साथ एक हाउस बनाते हैं, प्लास्टिक वाले ब्लॉक्स भी होते हैं, उसके साथ भी हम हाउस बनाते हैं, पजल खेलते हैं. जस्ट रेज योर हैंड्स, कौन कौन ये इंडोर वाली गेम्स खेलता है जो कल मैम ने बताई थी? रेज योर हैंड. वेरी गुड, वेरी गुड. आई कैन सी बहुत सारे बेबीज इंडोर गेम्स भी खेलते हैं, है ना? So today ma'am is going to talk about outdoor games जो हम बाहर जाके खेलते हैं. ठीक है? So ma'am अभी आपसे एक स्क्रीन शेयर करेंगे. Look at the outdoor games that we play outside. Outdoor games कहाँ खेली जाती हैं? मनस्वी गुप्ता, आउटडोर गेम्स कहाँ खेलते हैं? बाहर जाके खेलते हैं कि घर के अंदर खेलते हैं? मनस्वी गुप्ता, बाहर खेलते हैं. वेरी गुड. सो आई विल बी शेयरिंग वन स्क्रीन विद यू. सो वी विल लुक एट कि हम आउटडोर गेम्स कहाँ खेलते हैं. प्लीज लुक एट द स्क्रीन एवरीबॉडी. Just a second, give me a second. I'll be sharing the outdoor game screen. Yes. So कहाँ कौन कौन सी होती है आउटडोर गेम्स? इसमें से अभी आपको कुछ कुछ पता होंगी, कुछ कुछ नहीं पता होंगी. ठीक है? फर्स्ट इज सर्फिंग. फर्स्ट इज सर्फिंग. ये आपको थोड़े से आप बड़े हो जाओगे तब आपको समझ में आएगी ये गेम, राइट? द सेकंड इज रनिंग. रनिंग कौन कौन करता है? कौन कौन रनिंग करता है बाहर जाके? मैम जब मुझे नहीं दिख रहा. क्या नहीं दिख रहा बेटा आपको? ये प्लीज दिख गया.
Okay. Sangeeta ma'am, hope my screen is visible. Yes, Sangeeta ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, right पे बेटा please check your connection बेटे. Yes, so first is running. हम run करते हैं ना बाहर जाके पार्क में, आपने देखा होगा jogging करते हैं, running करते हैं. So it is a outdoor activity, right? जो हम बाहर जाके करते हैं. Okay. The second one is skydiving. ये भी अभी आपके लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है. स्काई डाइविंग आपने देखा होगा जब हम कहीं बाहर पहाड़ों में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं. दिस इज डन ओवर देयर, और ये बड़े लोगों के लिए होती है. ठीक है, जैसे मम्मा पापा बड़े हैं उनके लिए होती है स्काई डाइविंग. दैट यू विल लर्न इन द लेटर क्लास. ओके. द सेकेंड वन इज हॉर्स राइडिंग. अब मुझे ये बताओ, हॉर्स पे कौन कौन बैठा है? कोई बेबी है जो हॉर्स पे बैठा है, जिसने हॉर्स की राइड ली है? शो मामा थम्स अप अगर किसी बेबी ने हॉर्स राइड ली है. एनीवन इज देयर? हम हॉर्स पे बैठ के हमने राइडिंग करते हैं ना, दैट इज नोन एज हॉर्स राइडिंग. और वो हमारे घर पे तो नहीं हो सकती, उसके लिए तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना. वेरी गुड, गुड टू हियर दिस, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज सेलिंग. ये भी हम बोट में बैठ के जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग. अब थोड़े से बड़े हो गए तब आपको ये कराई जाएगी. ऑलराइट. फुटबॉल. फुटबॉल किस किस, वेरी गुड. फुटबॉल किस किस के पास है? कोई बेबी है जिसके पास फुटबॉल है? सब बेबीज के पास होगी फुटबॉल, है ना? Yes, so football is another outdoor game or activity. Okay. The next one is very good. The next one is golf. गोल्फ भी हम खेलते हैं ना, बेबीज के लिए भी आती है गोल्फ वाली स्टिक और बड़ों के लिए भी आती है. सो द अदर वन आउटडोर एक्टिविटी इज गोल्फ. जो हम बॉल डालते हैं, एक होल होता है उसके अंदर हमें बॉल डालनी होती है, दैट इज नोन एज गोल्फ. ओके. The next activity, the next game is tennis. ये भी आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, स्कूल में जाओगे, then you'll be able to play the tennis game also, right? And other one is rock climbing. जो rocks के ऊपर climb करते हैं, ये भी बड़े लोग करते हैं. So this is also one of the outdoor activity. Okay? जो आप babies के लिए है, that ma'am is just telling you running you can do. You can go and do horse riding. You can play football, tennis, right? So these are the activities for your age group. ठीक है, बाकी एक्टिविटीज आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्लासेस बड़ी होती जाएंगी, यू विल बी लर्निंग द अदर आउटडोर एक्टिविटीज एंड अदर आउटडोर गेम्स. क्लियर? और क्या खेलते हैं हम बाहर जाके? नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू, और क्या खेल सकते हो आप बाहर जाके? आराध्या विल चल. यस, क्रिकेट भी हम खेल सकते हैं. वेरी गुड. 1 by 1 बेटा, 1 by 1. वेरी गुड. फुटबॉल भी खेल सकते हैं. यस, आराध्या आप कौन सी गेम खेल सकते हो बाहर जाके? बैडमिंटन. वेरी गुड. बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, टेनिस भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, है ना? और कौन सी गेम खेल सकते हैं? यस, साइकिलिंग. साइकिलिंग भी कर सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. तो खेलते हैं. हाइड एंड सीक भी तो खेलते हैं. वेरी गुड. हाइड एंड सीक बेटा, आप हाइड एंड सीक घर पे भी खेल सकते हो और हाइड एंड सीक आप बाहर भी खेल सकते हो, है ना? हम कई बार हाइड एंड सीक घर पे भी खेलते हैं ना. वेरी गुड, वेरी गुड. So today we have discussed about the indoor activity, outdoor activities जो हम बाहर जाके खेलते हैं, right? कल हम एक पेज करेंगे, एक वर्कशीट करेंगे, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी मिक्स, इंडोर एंड आउटडोर. सो आपने कल मैम को बताना है कौन सी एक्टिविटी आउटडोर है और कौन सी एक्टिविटी इंडोर है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आई विल बी आस्किंग one example I'll be taking today. Yes, Trisha will tell. Trisha, you need to tell ma'am. Yes, where we play football in the house, it is a indoor game or outdoor game? फुटबॉल कहाँ खेलते हैं? आउटडोर. 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 यस, आउटडोर बाहर जाके खेलते हैं, है ना?
और आयांश हम चेस कहाँ खेलते हैं? एक गेम होती है ना चेस, उसको हम इनसाइड खेलते हैं अपने हाउस के या आउटसाइड? Indoor. Yes, that is an indoor game. ठीक है? So tomorrow I'll be asking you such type of question about indoor game and outdoor game. Clear to everyone? Very good. Now everyone will stand up. Stand up, everybody, and say bye to your mom and to your friends. Yes, stand up all of you.